Ladies and gentlemen, I humbly seek Honorable Mr. Justice Sanjeev Khanna's permission to begin with today's conference. Puny Judge, Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice Gurmeet Singh Sanbalia, Chairperson of the Punjab State Legal Services Authority and Puny Judge of the Punjab and Haryana High Court, Honorable Mr. Justice Arun Palli, Chairperson of the Haryana State Legal Services Authority and Judge, Punjab and Haryana High Court, Honorable Mr. Justice Trilok Singh Chauhan, Chandigarh Legal Services Authority and Judge, Punjab and Haryana High Court, welcome your Lordships and the Learned Member Secretary, National Legal Services Authority, OST, State Legal Service Authority, Himachal Pradesh, and all the Learned Member Secretaries of the Legal Service Authorities of Punjab and Haryana, the Learned Chairpersons of the District Legal Service Authority, the Learned Secretaries of the District Legal Service Authority, the Legal Aid Defence Councils, the paralegal volunteers joining us today, and the Anganwadi workers. Thank you for joining us in this conference today. It's the philosophy of Atithi Devo Bhava and treat guests akin to God. Here in Chamba, we proudly uphold this tradition by honouring our guests. But therefore, may I kindly request Shri Chirag Bhanu Singh, Learned Chairman, District Legal Service Authority, Bilaspur, to honour Honourable Mr. Justice Sanjeev Khanna. This conference is being conducted under the initiative of His Lordship and marks a significant milestone as it is perhaps district. Your vision and leadership have made this possible, Lordship, and we are truly grateful. Chairperson, District Legal Services Authority, Kullu, to kindly honour Honourable Mr. Justice Arun Palli, Judge, Punjab and Haryana High Court. May I kindly request Shri Bhuvnesh Avasthi, Learned Chairman, District Legal Services Authority, Hamirpur, to honour Honourable Mr. Justice Trilok Singh Chauhan. Ms. Vijay Lakshmi, Learned Additional Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, to honour Honourable Ms. Justice Lisa Gill. I am delighted to invite Honourable Mr. Justice Trilok Singh Chauhan, Judge of the Honourable High Court of Himachal Pradesh and Executive Chairperson of the Himachal Pradesh Legal Services Authority, to deliver the welcome address. Good morning to everyone. Known for its 84 temples built in Shikhar style of architecture and Manimesh pilgrimage, Chamba, located at the crossroads of Dauladhar and Bir Punjab ranges, has a history filled with grandeur and awe. Initially by Marut tribes and then mainly by the Varman dynasty, its history reveals stories of their dedication, public service and sacrifice. There is a folklore that Rani Suri sacrificed her life to bring water in Chamba. In 1908, when even the major cities in India had no electricity, of its visionary king, Raja Puri Singh. Its brass metalwork, more especially the Chamba Thal, which you just saw, has genealogical roots in the bronze, paintings of medieval age, resonate artwork and resilience of the people of this area. Dalhousie, named after Earl of Dalhousie, with Khajiar, mini Switzerland of India, in its background, basks in the glory of its colonial linkages. Securing justice to all the citizens is a part of constitutional scheme. Therefore, legal services to the underprivileged and persons living at fringes and suffering from various kinds of intersections, how the legal aid workers functioning at the grassroots level can be motivated in a big way, and how the developments done in the field of communication can help in rectifying these difficulties, are the topics which need deliberation and detailed discussion. On behalf of the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, I have the great privilege to welcome my Lord, Honourable Shri Justice Sanjeev Khanna, Judge Supreme Court of India and Executive Chairman, NALSA. His Lordship began his illustrious career in law
by enrolling as an advocate on July 28, 1983. Over the years, His Lordship built a reputation for his expertise in almost all the fields of law. His Lordship practice was marked by a commitment to pro bono work and a deep sense of social justice. After elevation in 2005 as the judge of the Delhi High Court, His Lordship had Honorable Justice Khanna's judicial philosophy is characterized by deep respect for the constitutional values and human rights. His Lordship believes in transformative potential. His Lordship's judgments reflect nuanced understanding of the law and a commitment to ensure that justice is accessible to all sections of the society. The idea conceptualized by His Lordships to have a diverse and well-trained workforce of paralegal with the need to use content that is simple and easily comprehensible by the public has ensured the meaningful lack of trust in legal services institutions and its functionaries among many under-trial prisoners and convicts. His Lordships highlighted the need to bring about a perceptual change by taking remedial action and emphasized on the need to strengthen the prison legal aid clinics and the Office of Legal Aid Defense Counsel. After elevation in 2005 as the judge of the Delhi High Court, His Lordship has made significant contributions to the Indian judiciary through his profound judgments and unwavering commitment to justice. It is the dedication and judicial brilliance which led to His Lordship's elevation to the Supreme Court of India. Honorable Justice Khanna's judicial philosophy is characterized by deep respect for the constitutional values and human rights. His Lordship believes in transformative potential of the Constitution and has often emphasized upon the need to interpret it in a manner that promotes social justice and equality. His Lordship's judgments reflect nuanced understanding of the law and a commitment to ensure that justice is accessible to all sections of the society. The idea conceptualized by His Lordships to have a diverse and well-trained workforce of paralegal volunteers and legal aid counsels, use of technology to make justice easily accessible, and the need to use content that is simple and easily comprehensible by the public has ensured the meaningful and equitable access to justice. Discerning a lack of trust in legal services institutions and its functionaries among many under-trial prisoners and convicts, His Lordships highlighted the need to bring about a perceptual change by taking remedial action and emphasized on the need to strengthen the prison legal aid clinics and the Office of Legal Aid Defense Counsels, while simultaneously stressing on the need to bolster the monitoring and mentoring mechanism in place. Honorable Justice Khanna launched the Restoring the Youth campaign. The need for launching this campaign was probably felt because of several unfortunate cases that came recently to light when juveniles were found lodged in prisons meant for adult offenders. Taking note of this tragic reality of these juveniles languishing in jail, which stood in stark contrast to the ideals of justice, rehabilitation, and the fundamental belief that no child should be forced to navigate a criminal justice system meant for adults, NALSA curated this pan-India campaign. This campaign is intended to transport such juveniles from the dark alleys of adult jails and transplant them into an environment that fosters their growth, nurtures their potential, and offers them a pathway towards societal reintegration. On 8th April 24, Honorable Justice Sanjeev Khanna formally released a framework and schedule for quarterly meetings of under-trial review committees for the year 2024 in order to ensure that the under-trials do not undergo long periods of incarceration without trial, more especially for petty cases. While monitoring of NALSA scheme of early access to justice at pre-arrest stage, arrest stage and remand stage, the number of the under-trial prisoners is also not now increasing at the pace it was earlier. There are thousands of beneficiaries of the initiatives and schemes launched by His Lordships. Once again, I welcome His Lordship in this conference. On this occasion, I also welcome Honorable Chief Justice Gurmeet Singh Sandhwalia,
Judge, High Court of Punjab and Haryana, and Executive Chairman, Punjab Salsa, Honorable Justice Arun Pali, Judge, High Court of Punjab and Haryana, and Executive Chairman, Haryana Salsa, Honorable Ms. Justice Lisa Gill, Judge, High Court of Punjab and Haryana, and Executive Chairman, UT Chandigarh, Salsa, to the one-day state conference of District Legal Services Authorities of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Chandigarh, who after undertaking a long and arduous journey have graced the occasion today. I also welcome Member Secretary and the officers of NALSA, Member Secretaries and nominated Chairmen and Secretaries of District Legal Services Authorities or participating states to this conference. Also welcome Legal Aid Defense Councils, our paralegal volunteers working in the legal services institutions in Dalhousie and surrounding areas, and the Anganwadi workers. I welcome each and everyone who is associated with this conference in any manner and look forward to a meaningful day ahead. I believe the cozy and serene early autumn of Dalhousie will generate in the minds of the participants new ideas and thoughts in dealing with these key issues and challenges. Thank you. Jai. Now, I am privileged to invite Honorable Mr. Justice Sanjeev Khanna, Judge of the Supreme Court of India and Executive Chairperson of NALSA, to transition into our first interactive session on empowering our foot soldiers, the paralegal volunteers. I would also like to invite Ms. Shreya Arora Mehta, OSD NALSA, to kindly assist his lordship. Everybody, for me it's coming to a hometown and I'm very happy that we have with us Sandavalia, Justice Arun Pali, Justice Lisa Gill from Punjab and Haryana High Court, and our generous host from Himachal Pradesh High Court, Mr. Justice Tarlok Singh Chauhan. I have been at the helm of affairs of NALSA for nearly about 8-9 months now, and I had occasions to go to Madhya Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Kerala, Orissa, Jammu Kashmir. And all the sessions we had over there were very interactive sessions. They were sessions in which we wanted participants to participate. Invariably, my itinerary would be visiting the jail, interacting directly with the prisoners, going to villages in remote parts, and wherever we had established legal aid clinics, interact with the persons who are in charge of those legal aid clinics, interact with the villagers, come to know about what are the problems and issues, interact with the paralegal volunteers. And by the way, we're going to change the name of paralegal volunteers. In English, it will continue to be paralegal volunteers. We're going to call them Adhikar Mitra, a person who is a helping hand. जो यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए मददगार का हाथ, अधिकार मित्र, बिकॉज एक्सेस टू जस्टिस के लिए हमें पैरालीगल वॉलंटियर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है. So I'm going to change what I've been normally doing in most of these conferences, because हमारे यहाँ से जो पैरालीगल अधिकार मित्र आए हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं संडे का दिन. So वो हम लोग काफ़ी दूसरा काम करेंगे, पर आपसे हम पहले वार्तालाप करेंगे और आपसे हम पहले इंटरेक्शन करेंगे, उसके बाद फिर कॉस्ट पर हम चेंज करेंगे ताकि आपसे हम कर सकें. नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है वो 1985 में इनेक्ट किया, 1987 में इनेक्ट किया गया, बट तकरीबन 7-8 साल लगे बिफोर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया 9 नवंबर 1995 में. एक किस्म से जो ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, ये बहुत फ़र्क है, कहीं पे भी दुनिया में इस टाइप का एक्ट नहीं है. इसके 3-4 मैं आपको रीजंस देता हूँ क्यों ऐसे है. एक तो सेक्शन 12 के इस एक्ट के मुताबिक तकरीबन 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एंटाइटल्ड टू लीगल एड को हमने कवर करना है. दूसरा, नॉर्मली
लीगल एड का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्यूरोक्रेसी के पास होता है, एग्जीक्यूटिव के पास होता है, क्योंकि हमारा काम है एडजुडिकेट करना, जजेस का काम है डिसाइड करना। हम एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आते, अब अपनी कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते तो दूसरी भी एग्जीक्यूटिव की एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाते। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रिंसिपल है। एक ये प्रिंसिपल है और दूसरा है प्रिंसिपल जो आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे मैं हिंदी में डिफाइन करूँ थोड़ा मुश्किल है, पर उसका ये मतलब है कि जो आदमी काम कर रहा है उसके साथ जो आता है उसके पास एक किस्म में हितों की टक्कर। जो ब्यूरोक्रेसी है कई बार उनके पास ही आप जाते हैं अपना अपनी दिक्कत लेके, और वो अगर सॉल्व नहीं होती तो एक टक्कर आसी आ जाती है, हसरतों की टक्कर जहाँ पे थॉट्स आ जाते हैं। इसलिए पार्लियामेंट में जुडिशरी को ये रोल दिया कि आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के हेड हो गए। अब बहुत सारे हम जैसे जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का काम है लीगल एड देना, सरकारी वकील या डिफेंस काउंसिल देना। 50% है। इनफैक्ट आपको सबको मैं बताना चाहता हूँ तकरीबन 30% ऑफ द केसेस जो ट्रायल कोर्ट में होते हैं उसमें हम डिफेंस काउंसिल देते हैं। 50% हो जाता है जब वो अपील में जाते हैं, अपील फाइल होता है तो 50% अपील केसेस में हम डिफेंस काउंसिल दे रहे हैं। पर ये बहुत नैरो विजन होगा हम सब के लिए कि सिर्फ हमने डिफेंस काउंसिल देना है, लीगल देना। जब हम कहते हैं वर्ड यूज़ करते हैं हमारे उसमें मोटो में लिखा हुआ है एक्सेस टू जस्टिस। अब जस्टिस क्या है? जस्टिस ये कहना कि सिर्फ कोर्ट कचहरी जाके आपको जस्टिस मिले, वो तो जस्टिस का बड़ा नैरो व्यू है। ठीक है, कोर्ट कचहरी में जस्टिस मिलना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और एक्सेस टू जस्टिस का मतलब है जो आपके हक हैं, कानूनी हक हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए, चाहे स्टैट्यूट से दिए, आपकी प्रोग्राम्स और स्कीम से दिए, वो आपको मिलने चाहिए। जिनको वो अधिकार है वो मिलना चाहिए। अब हम सब जानते हैं हिंदुस्तान में कानून बहुत अच्छे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारी आई डोंट थिंक कोई मुकाबला है उस कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने जो बनाया था इतने सोच समझ के बनाया था और अभी तक उसको हम बड़े गर्व से कहते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें बहुत फख्र है और होना भी चाहिए। हमारे जो दिक्कत आता है वो आता है इम्प्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में दिक्कत आता है, उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करें। उसके लिए हम आप लोगों के मदद चाहते हैं। उसमें आपका सबसे बड़ा हाथ है। आप ये मत सोचिए कि आपका रोल कम है, आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए 80% पॉपुलेशन है, उसको हमें लीगल एड एक्सेस देना है, उनको बताना है, उनके हकदार बताने हैं, उनको समझाना है कि क्या आपकी राइट्स हैं। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? हम तो टोटल जो जुडिशरी की स्ट्रेंथ है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की अबाउट 20,000 तो कुछ नहीं कर सकता। अब लीगल एड के हम काउंसल्स भी करते हैं, पर लीगल एड के काउंसल्स तो कचहरी में जाते हैं, कचहरी में लड़ते हैं केसेस। उनका जो रुझान है वो डिस्प्यूट में होता है, डिस्प्यूट को आर्ग्यू करने में होता है। तो हमने एक स्कीम निकाला पैरा लीगल वॉलंटियर्स का, अधिकार मित्र का। अब इस अधिकार मित्र के लिए हमने एक स्कीम बनाई हुई है, वो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताऊंगा। पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास तकरीबन 42,000 PLBs हैं ऑल ओवर इंडिया। इस स्कीम के मुताबिक हर एक तालुका लीगल सर्विस कमेटी, जो सबसे नीचे वाला हमारा कमेटी है, तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी जो है वो सबसे नीचे वाला कमेटी है, उसमें हमारे पास कम से कम 30 होने चाहिए लीगल PLBs। सबसे कम 3 हमें उसमें 30 होने चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पे
हमारे पास तकरीबन 50 होने चाहिए। बहुत जगह अभी ये कमी है, उसमें बहुत जगह कमी है, और कमी 2 कारण से है। एक तो नंबर कम है, हमें अभी मोटिवेट नहीं कर सके सबको कि आप ज्वाइन करें। दूसरा ये है एक्टिव भी होने चाहिए, पैसिव तो हम कर सकते हैं, एक्टिव भी होने चाहिए। तो इसकी सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिक्वायरमेंट है आपका एक करुणा भाव होना चाहिए आप में। अगर आप लीगल आप PLB बनना चाहते हैं, सम्मानभूति होनी चाहिए आप में। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें दूसरे को सम्मान देना, उसको डिग्निटी देनी, और चिंता होनी चाहिए। जहाँ पे आपको लगे गलत हो रहा है उसके लिए आपको चिंता भी होनी चाहिए। तो ये 3 हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। और कौन कौन बन सकते हैं? तो उसके अंदर हैं टीचर्स हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़रूर सोचें आप अगर आप बन सकते हैं। डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, पर वकील नहीं बन सकते PLVs। वकील प्रो बोनो काम कर सकते हैं पर PLVs नहीं बन सकते। मेंबर्स ऑफ नॉन पॉलिटिकल सर्विस ओरिएंटेड जो NGOs हैं वो बन सकते हैं, क्लब्स बन सकते हैं। जो महिलाओं के नेबरहुड ग्रुप्स हैं जो कई या कम्युनिटी लेवल पे काम करते हैं, उनके ग्रुप्स बन सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो मार्जिनलाइज वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो डिस्क्रिमिनेटेड या लोग उनको दिक्कत होती है एक्सेस टू, और एनी अदर पर्सन जो हम सोचते हैं कि वो कर सके उसको हम करते हैं। अब हमारा इनको हम सीधे इंडक्ट करते हैं, बट उनको भी सब जो नहीं पता होता कि क्या क्या, तो हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ओरिएंटेशन होता है पहले, फिर एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, एक रिफ्रेशर कोर्स होता है। ये अब हम कोशिश करेंगे अगले साल में कि ये हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करें, क्योंकि PLVs ही हमारे इंटरमीडिएटरीज हैं जो हमें कनेक्ट करते हैं लोकल पॉपुलेशन से, लोकल लोगों से। आप हमें आके बताते हैं उनकी दिक्कतें क्या हैं। मैं भी आपको थोड़ा सा रोल के बारे में बताऊंगा, फिर श्रेया जो हमारे साथ काम करती हैं वो लीगल नासा में है, वो टेक ओवर कर लेंगे, फिर आपसे इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। इसके अंदर जो हम ट्रेनिंग आपको जो आपके रोल हैं उसके सबसे पहले तो ये है कि आपको लोगों को, हमारे लीगल लिटरेसी बहुत कम है, बहुत अभाव है, अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है कि क्या क्या राइट्स हैं आपके, और वो क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को तो राइट्स का एक्सरसाइज कैसे करें। तो लीगल लिटरेसी को हमने एड्रेस करना है, तो आपने एजुकेट करना है उनको, पर आपको भी पहले पता होना चाहिए पूरी राइट्स क्या है, तभी आप एजुकेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, चाहे आपस में हो चाहे गवर्नमेंट के साथ हो, वो आप हमें बताएं ताकि हम उसमें एंटर कर सकें। यहाँ पे मैंने देखा गांव में जाके, आपको मैं दिल्ली का एक एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली में भी गांव है, तकरीबन मेरे को 2 घंटे लगे पहुँचते हुए, बिल्कुल प्योर जैसे आपके हरियाणा पंजाब में गांव है, हिमाचल में गांव है, वैसे ही गांव थे पूरे। वहाँ पे गए तो उन्होंने दिल्ली में सारे दिल्ली को अर्बनाइज कर दिया। अब उसका नतीजा ये हुआ कि म्यूटेशन होनी बंद होगी, क्योंकि अर्बनाइज हो गई विलेज तो म्यूटेशन नहीं होते, फिर म्युनिसिपल कमेटी आ जाती। तो वो हैरान हो गए अब हम करें क्या, डेथ हो गई, अब हमारी म्यूटेशन नहीं होती। तो DC वहीं थे वहाँ के, तो हमने उनसे पूछा था ये क्या प्रॉब्लम है, ये तो सॉर्ट आउट करनी है। अब 8 महीने से यहाँ पे कोई म्यूटेशन, 1 साल से म्यूटेशन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ये निकाल दी है, कैसे म्यूटेशन करेंगे। अब ये पॉसिबल हो सका, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ देते तो वो नहीं पॉसिबल हो सकता, पर ये पॉसिबल हो सका क्योंकि हमने इंटरवीन किया और उनको समझ आ गई कि हमने कहा अगर नहीं होता तो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर हो जाएगा। कल मैं जस्टिस संदेवाले से बात कर रहा था, मेरे को पता चला एक जेल में बहुत दिक्कत, वहाँ पे सैनिटेशन और हाइजीन के स्टैंडर्ड बहुत पुअर है। तो कुछ देर तक हमने टॉलरेट किया, चिट्ठियाँ पत्री हुई, नहीं हुआ, पिटीशन फाइल हुआ, तुरंत एक्शन हो गया।
फ़र्क पड़ा। तो ये चीज़ें तभी होता है जब हमें इन्फॉर्मेशन आए, आप लोगों ने ही हमें इन्फॉर्मेशन देना है। तो दूसरा आपको ये बताना है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तीसरा है, जब आपको पता चलता है कि ट्रांसग्रेशन या वायलेशन ऑफ लॉ हो रहा है तो आपको कम्युनिकेट करना है हमारे अथॉरिटीज़ को, हमारे जो लीगल सर्विसेज के हैं लोगों को। चौथा फंक्शन है, आपने देखा होगा बहुत बारी पुलिस उठा के ले जाती गाँव वालों को, किसी को कुछ हुआ, छोटे छोटे होते ही छोटा सा झगड़ा हुआ, क्या नहीं हुआ। तो जब भी आपको पता चले कि कोई उठा के ले गया तो आपको मेडिसिन का काम उनको करने दीजिए, पर आपको स्टिल पता होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन फिर आपको देनी है हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को। फिर वकील अपॉइंट होंगे, वो जाएंगे, सब करेंगे। तीसरा ये, हमारे यहाँ बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे हम विक्टिम्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें हम एक लीगल एड काउंसलर पेश हो रहा है और दूसरी तरफ से हम विक्टिम और विटनेस को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहीं नहीं है बाहर तो ये भी दिक्कत है, कई वेस्टर्न नेशंस में अपील में आपको वकील नहीं मिलता लीगल एड का। वो कहते हैं आप कन्विक्ट हो गए तो आपको वकील नहीं मिलेगा लीगल एड का अनटिल अनलेस कोई एग्जामिन करके। में भी और नई जो संहिता है उसमें भी कॉम्पनसेशन के प्रोविजंस है, विक्टिम को भेज सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में भी भेज सकते हैं, चिल्ड्रन होम वगैरह भी। वो बहुत अच्छा है, पर एक एट द सेम टाइम के बहुत सारे जो छोटे तबके के लोग हैं और जिनको लिटरेसी इतना अच्छा है कि आपको हम मेंटेन करेंगे डिजिटल डिवाइसेस जो आपको दे देंगे जब आप काम पे जा रहे हैं, ताकि आप अपलोड कर सकें। किसी का एप्लीकेशन नहीं अपलोड हो रहा, जो दिक्कत हो रही है, जिसको मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा। आधार कार्ड की दिक्कत, आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट, और उसमें किसी के पास कोई दिक्कत हो, नाम की दिक्कत हो, कुछ हो, पेरेंट का नाम गलत हो या कुछ हो, तो या आपका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा हो, तो वो आप लोगों को मदद करनी चाहिए, उसमें मदद होनी चाहिए। राशन कार्ड की, राशन के ऊपर दिक्कत है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोगों को की दिक्कत है। एक और हम लोग काम शुरू किया हुआ है, आपने सबने, जहाँ पे भी मैं गया हूँ, लोक अदालत के बारे में सब जानते हैं और बड़ी खुशी से मिलते हैं, क्योंकि लोक अदालत में बहुत सारे काम निपट जाते हैं। तो आपको बताना है कि क्या क्या, किस किस टाइप के जो झगड़े हैं वो लोक अदालत में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और उनको कैसे हम और क्या क्या आपको दिक्कतें लगती हैं जो केसेस हम लोक अदालत में लेके आ सकते हैं जो अभी तक नहीं आए। कर्नाटका में एक प्रॉब्लम आया, वहाँ पे अब वो सर्वाइवर सर्टिफिकेट मांगते हैं। अब वो सर्वाइवर सर्टिफिकेट के लिए आपको एडवर्टाइज करना पड़ता है पेपर में, क्योंकि अगर उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, अब वो कहें जी हम एडवर्टाइज़ करें पेपर में तो हमारे 50-60 हज़ार रुपये लग जाते हैं सर्वाइवर सर्टिफिकेट लेते हुए। तो अब उसका हमने फिर से सोल्यूशन ये निकाला कि ये हमें PLVs ने बताया, तो PLVs से हमने सोल्यूशन ये निकाला कि हम हर एक विलेज के लिए जब 5-7 जने इकट्ठे हो जाएंगे, हम पैसे दे के एडवर्टाइज़ कर दें, उनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो उनका कानून का भी काम हो गया, हमारा भी, हमने भी अपना पूरा उनको मदद कर दी। आपको डेली रिकॉर्ड करना होता है जिस दिन आप जाते हैं, हम आपको कुछ पेमेंट भी देते हैं, ऐसा नहीं है पेमेंट नहीं देते हैं, पर ये काम जो है पेमेंट की वजह से नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते पेमेंट की वजह से मैं काम, अगर आप करेंगे तो होगा। हम इसको अब बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अभी रिसेंटली मेरे आने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से हमारा MOU हुआ है, और वो हम पे काफ़ी कुछ स्कीम्स के बारे में हम पे छोड़ना चाहते हैं कि हम उसको इवॉल्व करें, आगे बढ़ाएं। तो वो हम आपको काफ़ी उसमें चाहेंगे, आप उसमें आगे आए और आगे आके इसमें करें। विक्टिम्स को केयर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। विटनेस का भी हम एक लीगल एड काउंसलर पेश हो रहा है और दूसरी तरफ से हम विक्टिम और विटनेस को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एक ही केस में सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कहीं नहीं होता। बाहर तो ये भी दिक्कत है, कई वेस्टर्न नेशंस में अपील में आपको वकील नहीं मिलता लीगल एड का। वो कहते हैं आप कन्विक्ट हो गए तो आपको वकील नहीं मिलेगा लीगल एड का अनटिल अनलेस कोई एग्जामिन करके ढूंढता है कि केस ठीक है, इसमें अपील होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। कॉम्पनसेशन के प्रोविजंस है विक्टिम को,
कई केसेस में, तो वो आपको समझ होनी चाहिए, उसमें आपकी मदद चाहिए। आपको जेल भी हम भेज सकते हैं, लीगल एड क्लिनिक्स में भी भेज सकते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में भी भेज सकते हैं, चिल्ड्रन होम वगैरह भी भेज सकते हैं। वहाँ पे भी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जिसमें आपको शौक है जिस चीज़ का, उसमें कर सकते हैं। लीगल अवेयरनेस के कैंप्स आप लगा सकते हैं, और लोकेलिटी के अंदर अपने सब आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो हमसे कांटेक्ट करिए। एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये ऑनलाइन हमने फॉर्म्स वगैरह कर दिया, वो बहुत अच्छा। बहुत सारे जो छोटे तबके के लोग हैं और जिनको लिटरेसी इतना अच्छा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी मेरे में भी नहीं है इतना, बहुत सारे जनों में नहीं होगा, मेरे को भी कई बार पूछना पड़ जाता, तो वो आप लोगों को हम स्किल कर इसलिए कहा क्योंकि आपसे हम आपको समझ आ सके, आपसे बात प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सम्मान है कि मैं आज आपसे हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स, जिन्हें हम अधिकार मित्र कहते हैं, उनके महत्वपूर्ण भूमिका पर बातचीत करेंगे। फिर विधिक सेवा प्राधिकरण से आए हैं आपके साथ बातचीत करने और आपकी मेहनत का सराहना करने। ये बातचीत आपकी भूमिका को और मजबूत बनाने के सुझावों को सुनने का एक अवसर है। हमें आशा है कि ये वार्ता अन्य लोगों को भी इस योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। नालसा का थीम गीत है एक मुट्ठी आसमां। एक सुंदर और आत्मा को प्रेरित करने वाला गीत है जो समाज में न्याय और समानता के संदेश को फैलाने का कार्य करता है। यह गीत न केवल कानूनी अधिकारों को की जागरूकता बढ़ाता है, बल्कि न्याय प्राप्ति की दिशा में हर नागरिक के अधिकार को भी सशक्त रूप से प्रस्तुत करता है। इस गीत का हर शब्द दिल को छूने वाला है, जो कमजोर और वंचित वर्गों के लिए आशा और साहस की भावना जगाते हैं, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं और उन्हें न्याय पाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करती हूँ कि वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का थीम गीत चला दीजिए। सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए।
मैं आप सभी से, आप कार्यकर्ताओं से, आपसे आज जो हमारी योजनाएं हैं नालसा की, जो उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहली जो हमारी योजना है जो 2010 में आई थी, नालसा की आपदा पीड़ितों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से योजना 2000 प्राकृतिक कानूनी सेवाएं प्रदान करना। यह उन पीड़ितों के लिए है जो सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातीय उत्पीड़न, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के शिकार होकर आगग्रस्त तस्करी के पीड़ित, विशेष रूप से सभी आयु वर्ग की महिलाओं जिनकी चिंताओं का समाधान करने के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करना। यह योजना तस्करी की रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के प्रत्येक चरण के में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से है। कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए योजना 2015। इसका उद्देश्य है सभी असंगठित श्रमिकों को आवश्यक कानूनी सेवाओं को स्वास्थ्यगत रूप देना। राज्य सरकार और जिला प्रशासन से की मशीनरी को सक्रिय करना तथा सभी श्रेणियों के असंगठित श्रमिकों को पहचान की जा सके, उनका पंजीकरण किया जा सके और उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। नालसा की दूसरी स्कीम है आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन योजना 2015। इसका उद्देश्य है भारत के आदिवासी लोगों को अनेक अधिकारों, लाभों, कानूनी सहायता और अन्य कानूनी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने, न्याय सुरक्षा सुनिश्चित करना। हमारी एक और स्कीम है मादक पदार्थों को दुरुपयोग से शिकार और नशीली दवाओं के खतरे के उन्मूलन के लिए कानूनी सेवाएं। इसका उद्देश्य है आपूर्ति और पुनर्वृत्ति की कमी, नाशमुक्ति, पुनर्वास के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। इसके अलावा हमारी एक स्कीम है जो कि वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सेवाएं पहुंचाने के लिए है। अगली स्कीम हमारी है तेजाब हमले के पीड़ितों को कानूनी सेवाएं योजना 2016। आश्रय गृह में रहने वाली विधवाओं के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना 2017 की हमारी एक योजना है। नालसा की महिला पीड़ितों सर्वाइवर्स के लिए भी मुआवजा योजना 2018। इसका उद्देश्य है कि यौन हमले के शिकारों को उनको चिकित्सा आवश्यकताओं और पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रदान करना। कानूनी सेवाएं योजना 2024 जो कि अभी लॉन्च हुई है। इस स्कीम की उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि बच्चे जिसमें विकलांगता वाले बच्चे भी शामिल हैं, विशेषज्ञ, विशेषीकृत और सक्षम कानूनी पेशेवरों तक पहुंच प्राप्त करें और अपने कानूनी अधिकारों, हक, न्यायालय की प्रक्रियाओं को और नियमों को समझने के लिए साक्षर हों। नालसा की दूसरी स्कीम है मानसिक बीमारियों और बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवा योजना। ये भी अभी 2024 में लॉन्च हुई है। इसका भी उद्देश्य है कि वो होना चाहिए और किस तरीके से आपका, जैसे कि अभी हमें सर ने समझाया कि कैसे आपकी उनसे बातचीत होनी चाहिए और बातचीत होते वक्त की उसकी क्या महत्वपूर्ण होएगा कि आप लोगों को किस तरीके से उनको स्कीम को उनके तक पहुंचाना है और उनसे जुड़ी हुई जो भी उनकी पीड़ाएं हैं वो आपको अपने विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तक पहुंचानी है। हर एक विधिक सेवा प्राधिकरण में आपके सचिव के साथ साथ आपके मेंटोर्स होंगे जिनको आप अपने डेली जो आपके आए दिन आपको कोई तकलीफ होती है, कोई दिक्कतें आती हैं, आपको समझ नहीं आता कि ये जो हमारी योजना है इसको सरकारी योजना से कैसे जोड़ें। और अगर जैसे साहब ने अभी आप सबको समझाया कि कभी टेक्नोलॉजी को लेके, कभी कुछ बिकॉज बहुत सारे पीड़ित लोग होते हैं, उनको समझ सब होती है पर उनको लिखने में दिक्कत होती है। कहीं उनको लिखने में दिक्कत नहीं होती, कहीं उनको अपनी बात आगे रखने में दिक्कत होती है। जो मैंने बताई है आपको योजनाएं, जहाँ पर वो नहीं पहुँच सकते वहाँ आप लोग हमारे अधिकार मित्र आप लोग पहुँचेंगे। और जो हमारा उद्देश्य है, आज हमने ये जो सामने ये पहला सेशन इसलिए लिया क्योंकि आप लोग ही सबसे हमारे फुट सोल्जर्स
आप लोगों के थ्रू ही विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम है, काम है और सब कुछ है। तो इसी योजना के बारे में जो मैंने आपको बताया और जो साहब ने आपको बताया, साहब ने इसलिए आपसे शुरू किया क्योंकि इसी में आपका किस तरीके से उनसे कम्युनिकेशन का आप जानते हैं, कैसे आप उनसे बातचीत करेंगे कि जिससे वो आपसे खुलकर बात करें। इसके लिए आप लोगों की ट्रेनिंग, आप लोगों ने भी मुझे सुबह बताया कि आप लोगों की ओरिएंटेशन और बेसिक ट्रेनिंग हुई है, पर विधिक सेवा प्राधिकरण में समय से समय में रिफ्रेशर कोर्स भी होते हैं, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके चेयरपर्सन और जो उसके सचिव हैं, वो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी तकलीफें हैं, उसको देखकर, जैसे ऐसा हो सकता है कि जो दिल्ली के गांव में, जैसे साहब ने बताया, वहाँ पे म्यूटेशन की दिक्कत है, पर जिस गांव के आप कर्मचारी हैं, जहाँ पे आप अधिकार मित्र हैं, वहाँ पे म्यूटेशन की दिक्कत ना हो, वहाँ पानी की दिक्कत हो या बिजली की दिक्कत हो या वहाँ पे राशन कार्ड ना हो, तो जो आपके एरिया में आपको, बिकॉज जो आपके विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं उनको नहीं पता होगा, उन्होंने आपको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दिया, बेसिक ट्रेनिंग दिया, अब आप हैं जो उन तक पहुंचाएंगे कि वहां पर असली तकलीफ क्या है, जिससे आप उनके साथ मिलके कि इनमें से जो सी योजना है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन सरकारी रूप से भी और हमारी विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ भी मिलकर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो इसी से मैं आप लोगों की इंटरेक्शन शुरू करूंगी सबके साथ, आप लोगों की, बिकॉज आज जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें हमने शुरू किया, क्योंकि हमारे पहले एक आज से कुछ समय 10-12 साल पहले हम लोगों ने जो हमने आंकड़े देखे तो उसमें देखा था कि सारे जो बच्चे विधि की पढ़ाई कर रहे हैं सारे वही बच्चे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं। तो इस साल की शुरुआत पर हमने सर के गाइडेंस पे हमने शुरू किया कि नहीं, हमें कम्युनिटी के लोग चाहिए, जो लोग उनके साथ रहते हैं, बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो जिनको पीड़ा होती है पर वो अपनी पीड़ा बताते नहीं हैं, पर आप उनके साथ रहते हैं। जैसे हमें मालूम है जब हम कभी अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोग करें, अभी तक आप लोगों ने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम किया है? 100 पे फोन करते हैं और हम ये देखते हैं कि कौन फोन उठा रहे हैं, और अक्सर हमारे साथ हुआ है और फिर हमने व्यक्त करें। तो आप भी हमारे आँख और कान है, अगर आप 15-100 पे किसी का फोन करते हैं और अगर प्रॉपर उसको रिसीव कॉल नहीं होती है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने सचिव तक ये बात पहुँचाएं। काफ़ी चल रहे थे तो वो बड़े आराम से आती है, कहती है मेरी चचेरी बहन की आगे की दिक्कत है उसको। तो अब इतना हमें भी एक्सपीरियंस है कि हम समझ गए कि आगे कुछ नहीं है, क्योंकि सबकी एक सोसाइटी में जहाँ वो रहती है और जैसा वो वहाँ पे था वो नहीं बोल सकती। तो मैंने जो उसने मुझसे बात करी तो मेरे साथ एक वकील साहब भी थे, तो मैंने उनको बोला कि इसकी जो बहन की वो दिक्कत है, बहन के ससुराल में आगे जो दिक्कत है, आप उसको पूरा एडवाइस, हमारा काम सिर्फ काम कहते हैं कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सेकेंड ओपिनियन लेने जाते हैं, कभी एक डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, कहा तो आप कहते हैं नहीं मैं तो दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर जाते हैं कि कहीं कोई डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी की जरूरत नहीं है, आप इसी से आप ये दवाई खाएं आपको आराम मिल जाएगा। अग्री करते हैं आप सब? सो इसी तरीके से विधिक सेवा प्राधिकरण में भी आप लोग से सारे औरतों को, सारे 80% जैसे साहब ने बताया कि जो डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन, जो हमारे जितने लोग हम लोग कवर कर लेते हैं मिशन हिंदुस्तान की कवर होती है। अब ये आपकी समझदारी पे होता है और हमारा आपसे कोऑर्डिनेशन। आप में से कौन बोलना है? तो जैसे कि हमने फील्ड वर्क किया वो भी थोड़े दिन हुए हैं, 10-15 दिन, तो हमने लोगों के साथ जैसे भी मतलब हमने विजिट किए हैं, तो पहली तो बात कि लोग हमारे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम नए गए हैं ना, तो उनके साथ जैसे भी हम बोलते हैं कि अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, तो उनका यही बोलना है कि पहले भी बड़े आ गए हैं और हमारा कुछ नहीं बन पाया भाई आज तक। तो हम बोलते हैं कि भाई चलो आप कोशिश करो, एक बार हम पर भी ट्रस्ट कर लो। फिर हमने उनको बदालत क्या है, महिलाओं के लिए कौन से राइट मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए गए सरकार द्वारा, तो उन्होंने मतलब अभी तो हमें ऐसा लगा कि वो हम पर विश्वास कर ही लेंगे, मतलब जैसे हमने उनके बाद विजिट किया हुआ है। इसका एक जो खुल के बोलता है एक जना, उसका काम आप पूरे मन से करिए। कॉन्फिडेंस जो है और क्रेडिबिलिटी जो है वो डेवलप होती है टाइम से। अब ये आपका वो आप पे बहुत है, और कहीं पे भी अगर वो देखेंगे क्योंकि नए है ना, तो एकदम से कोई बात नहीं, नए तो सब होते हैं, अभी नए तो जब बार जाएंगे
तो जैसे हम बार बार जाएंगे तो उन्हें आठ पढ़ने तब वो हमें खुल के बात कर सकते हैं हमारे साथ। और आपको गांव में की रिपोर्ट पे भी लिख के भेजी। यस सर। आप आगे डिपार्टमेंट को भी दो, डिपार्टमेंट को बोलिए, वो आपके ये वो बात कर रहे हैं, अपनी दिक्कतें शेयर भी कर रहे हैं हमारे साथ। क्या दिखते हैं आपको बताइए। जी सर, जैसे कि सर अभी एक औरत थी जिसके घर में शायद 10 साल हो गए हैं, लाइट नहीं है अभी, और वो उसके बच्चे जो हैं वो उसके पति के नाम पे भी नहीं है, क्योंकि वो उसके बाद उसने शादी कर ली और बच्चे भी नहीं नाम पे है। तो अभी उसने अपनी शादी जो है वो पंचायत में लिखवाई है, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे पंचायत में नहीं आ रहे। आइए रिपोर्ट भेजिए। आपके यहाँ कितने जगह पे आपने लिखा? काफी बड़े हो गए, उनका आधार कार्ड नहीं बन रहा है। वो बन जाएगा, वो तो आप कहेंगे तो वो बन जाएगा। आप में से जो महिलाएं हैं और जो सब जने जो हमारी कार की तरह है, तो आपके यहाँ यह प्रॉब्लम है कि कब है? थोड़ा जो है सर गाँव में ज़्यादा कई जगह पर है सर। अच्छा, तो उन केसेस में आपको उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। आपको अगर आपको कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको मदद चाहिए उनको, फिर आप हमारे कोर्ट नहीं किसी को ले जाना चाहते हैं, वो हमारा एक नहीं है, ये मत करिएगा, ये मत वहाँ करिएगा, आप कोर्ट ले जाएंगे। हमारा एक वो फिर वो विश्वास कर जाता है, लोग बातचीत करके जो उसका हक है दिलाना चाहते हैं। आपको अधिकार ये जो हमारा है आधार कार्ड वगैरह का दिक्कत है गांव में कि काफी? अच्छा, तो उसका आप डेटा सारा निकाल के भेज दीजिए, तो फिर हम तालुका कमेटी से हम डिस्ट्रिक्ट कमेटी में भेजेंगे, फिर उनके सकते हैं, पर वापस लिस्ट होना चाहिए ना पहले उसका, तो लिस्ट तो आप ही बना के देंगे। आपदा का शिकार हुआ, लेकिन उन तक जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ फौरी काम जो जारी करके अभी तक उनको प्रॉपर जो है वो कानूनी सहायता नहीं मिल पाई है जो उनको मिलना चाहिए, एक्चुअली वो डिजर्व करते हैं जिसके ये आप उसका सारा डिटेल अपने आप एक्शन लेंगे, वो फिर उससे पूछेंगे इस स्कीम के मुताबिक कितना मिलना चाहिए था, और जिस केस में परमानेंट लोक अदालत की वो यहाँ पे ना भी हो तो वो जहाँ पे है वहाँ पे भेजा जा सकता है। परमानेंट लोक अदालत कंटिन्यूसली चलती है, आपको कोई दिन नोटिस ले सकते हैं। और ज़्यादातर अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत है तो उनको भी समझ आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसकी फिर वो उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। उसको अगर कोई दिक्कत है तो उसका वेरी सर्कल सुपरवाइजर डलहौजी हूँ सर। मैं प्रोटेक्शन ऑफिसर भी हूँ डोमेस्टिक वायलेंस की। सर ICDS का जो हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो है काम, उसमें जो बच्चों में मालन्यूट्रिशन है, जो कुपोषण है, और जो स्टंटिंग बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं या लैक्टेटिंग वीमेन, उन पे काम कर रहे हैं। हम उनको स्वास्थ्य और शिक्षा दे रहे हैं। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हर महीने फर्स्ट 1 तारीख को सर उनको THR डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, बच्चों का हाइट वेट करती हैं, उनमें कितने बच्चे सैम या मैम में हैं वो सारा देखती हैं। अगर कोई सैम मैम में है तो होम विजिट के दौरान उनकी माताओं से वो बात करती हैं कि किस तरह से उसमें सुधार लाया जा सके। और सर प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की, तो जो पीड़ित महिलाएं जो हमारे पास केस आते हैं, या कोर्ट से आएगा या फिर थाने से आएगा, पुलिस स्टेशन से, तो उसमें सबसे पहले हम महिलाओं से बातचीत करते हैं कि वो क्या चाहती हैं। अगर महिला चाहती है कि उसने कोर्ट में केस लगाना है तो उसके लिए हम उन्हें बताते हैं कि उन्हें फ्री लीगल एड मिलती है, तो हम सर उन्हें कोर्ट में ले जाते हैं, फ्री लीगल एड के लिए अप्लाई करवाते हैं और उनकी DIR भर के उनको सबमिट करते हैं सर कोर्ट में। ये एक किस्म से तो बहुत फर्क पड़ सकता है। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, आपको हम मुबारकबाद देते हैं और बहुत खुशी हुई आप आए, आप बोले। आपके साथ और भी जने ऐसे होंगे? पर क्या यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का दिक्कत है? जी सर। हमारे से जो हमारे तालुका कमेटी है उनसे भी कांटेक्ट पे रहे, थोड़ा सा वर्कर से बात करिए, क्योंकि उनको वहाँ पे काफ़ी जो काम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बस काम बहुत ज़्यादा, कई जगह तो आंगनबाड़ी वर्कर्स कहते हैं हम आ नहीं सकते, PLVs नहीं बनेंगे, और बस काम बहुत ज़्यादा, तो वो दिक्कत होता है।
थैंक यू सर। ये जो सक्सेस स्टोरीज होती है जहाँ आपको लगता है कि आप अपने काम से लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण से जोड़ पाए हैं, तो वो जो आपने सचिव को ज़रूर दीजिए, जिससे हमारे न्यूज़लेटर में और वेबसाइट पे वो पब्लिश हुए। वो आपकी स्टोरीज पढ़ के आपके जैसा काम करने के लिए और भी लोग प्रेरित होंगे और आप सब की ट्रेनिंग ओरिएंटेशन हो चुकी है। वो बताइए आपको कुछ ऐसा ट्रेनिंग में जो आपको लगा कि आपने कुछ नया सीखा। लोग पुलिस स्टेशन गए थे। हेलो मैम, हमको सिखाया था जो फर्स्ट में हुई थी ना मीटिंग, उसमें सिखाया था कि जैसे क्राइम होते हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई, फिर किसी ने चोरी कर दी, उसमें सिखाया था। और सिविल कोड में ये सिखाया था कि घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो तो कैसे ये सिखाया था। और वरिष्ठ नागरिकों से कैसे बातचीत करनी है वो भी बताया गया था आप लोगों को। आप लोगों ने कभी बात करी उनसे, कोशिश करी? बिकॉज ये थोड़े से सर हमारी तरफ से कोशिश योजना में होती है कि वरिष्ठों की उनकी जो दिक्कतें हैं उनको भी योजना के अंदर ले आकर उस पर भी काम करना ज़रूरी है। आप लोग कोई वरिष्ठ नागरिक अगर आपके एरिया में है तो उनको भी इंकरेज करें कि पैरालीगल वॉलंटियर की ट्रेनिंग लें। कोई जानते हैं किसी वरिष्ठ नागरिक को, कोई रिटायर्ड आर? देखिए, हम लोग उनका को सम्मान देते हैं, तो जितना आप करेंगे और थोड़ा सा और सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कई जगह तो मेरे को वहाँ पे जहाँ पे हम मिले लोगों से, उनमें ये था कि हमें बनना है, बहुत जने खड़े हो गए बनने के लिए, तो दिक्कत हो गई, हमें कैसे बता सकते गेन करना चाहते हैं। औरतों को चाहते हैं, अभी भी हमारी जो है 42% 43% वुमेन है औरतें। जब मीटिंग अगली मीटिंग में यहाँ होगी, कहाँ होगी, तो आप सबसे पूछेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुआ। ठीक है? Dear guests, I would like to inform everyone that we will be taking a group photograph just here in the lawn downstairs. I kindly request everyone to assemble in the back lawn for this special moment. Your presence will make it memorable, so please join us. Thereafter, we'll break for tea. We will reassemble at 11:15 a.m. And then we go on to discuss interactive sessions like we had in the morning. It was very difficult to make absolutely free open up. It's a closed door conference. There is no, don't feel hesitant. Whatever you have, we like to listen to them. It's not a fault finding exercise. It's an exercise to improve our working. 50% of our work is legal aid. It's a constitutional mandate, and I request in 21, 38, and 39. And please realize one thing: it's very difficult to get into judiciary. It's a lot of competition. To get into elected or to get into bureaucracy at the higher levels again is a very tough job. But an advocate becomes a part of the third wing of the judiciary immediately on enrollment. Most of us don't realize the importance of that. Part and parcel of the third wing that is of governance. You're part of the governance system established by the Constitution. That's the importance of your role. If that role is understood by you, a lot of things, a lot of difficulties, a lot of problems get sorted out in the judicial system. Our judicial system is today being in a problem because not only of backlog of cases, vacancies, because also we find that deciphering truth, that is the factual truth, is very difficult for the judges. One of the retired judges had once said, judges ought to change. In case Indian judicial system is to become par excellence, the best in the world, as we should aspire to be, thrashed out by the lawyers themselves. We have commercial court system now has case management rules. I hope that will gradually imbibe. Probably
be by the grace of God as you are. That's another objective of the Constitution. Rule of law. That's far more bigger than mere case handling or legal aid. We have already spoken about protecting witnesses and victims, which is again a very important part. Nowhere in the world you have witnesses being threatened to give statements one way or the other, or witnesses, or victims. All this helps in building up confidence in the legal institutions. After all, institution survives and is respected because of the confidence. In spite of all the problems we have, legal institution or Indian judiciary is respected because of the confidence people have in us. Because we are supposed to be delivers, we deliver justice fairly, equitably, and that's why people flock to the courts. That's why we have a number of cases going up each and every year, in spite of all our issues that comes up. We have to improve the quality of justice, access to those who cannot afford legal representation. We have expanded that ambit to include legal literacy and education, so access to justice is far better. It helps builds confidence in legal institutions, checks arbitrary use of power, checks investigation process, it improves investigation process. Investigation has to be good in order that the judicial system also works well. We are not involved directly in investigation. In case we are able to ensure. When you press, I'll give you one simple example. We are all used to delays or limitation applications for publication or delays being filed by the government partners. Huge delays. Section 34 of the Arbitration Act. Now we have the Supreme Court years back held, delay beyond 30 days is not considered, regardless of the merits of the case. You may have an excellent case, but if you don't control, if your delay is more than 30 days, award is going to be, you can't challenge the award. The effect thereof is, in 99% cases, maybe more, all awards are challenged. And the challenge has to be made, whether they're the government or private party. Everybody challenges the award because all officers know, everybody knows that it has to be done. We can't, but this is how when we enforce in the courts strict principles of ensure investigation is done properly by our judgments, is improve the impact of quality of justice, because we then don't have to be bothered, don't have to look out what are the facts involved. Credibility and confidence in legal institution improves. It helps balance power dynamics in the legal proceedings, promotes equality before law. It improves legal knowledge and understanding among individuals, increases the life. This also has its impact. It's not that deterrent is not created by mere punishment or harsh punishment. Deterrent is created by the fact that you will be treated swiftly and as per the rule. But for legal aid, the apt definition which I found is describes existence of rules that provide a fair and against the state itself. That's as far as legal, all of us belong to the legal field is concerned. This is justice in one sense, but don't treat it as complete justice. It's not a complete definition of justice. Impossible. You'll be entitled to have access to an advocate when you're in custody. The law provisions also provide for it. How does a person who cannot afford an advocate have access? How do we ensure that? Constitutional awareness and literacy, legal representation, and legal advice and assistance. Legal awareness and literacy as role of lawyers, as judges, etc. We all carry that out. To us, legal aid and advice and assistance that again is handled by us need. That's a must, because if it's not given at the right time and early, the issue problems. He's not given that benefit for 6 months, 8 months, what he goes through. That also means ease of access. It should be easily accessible. That's our duty. That's our duty to ensure that there is ease of access. People can be able to access legal aid. Check. So why is it important to refer to the 3 prongs as well as our members from the state judiciary are concerned?
is you must keep all three have to be kept in mind. And then only legal services will be of that particular quality which are acceptable and will be performing our statutory and constitutional role. Early access, we have to raise awareness. Obviously, PLVs have to play a part. We being from the district and taluka legal services authorities and committees have to play a part in that. Reach in, reach out approach. Reach in is when people come to us. Obviously, we'll be able to. But more important is reach out when we go to them, when we interact with them, and we are able to give them information, what they want, and tell them about their rights, statutory, constitutional rights, as well as what we do for them, what we can do for them. There are 5 stages of trial. Obviously, we are all aware about trial stage, 5 stages of a case, in fact, not trial, maybe wrong word. Trial stage, appellate stage, but pre-trial stage is pre-arrest stage, arrest stage, and the remand stage. So we have to pre-arrest, arrest, and remand stage, then trial stage and the appellate stage. The weakest link which I have found in our is the pre-arrest, arrest stage. That's the weakest. We have been very weak in that. We have to improve, strengthen, and that's across country. I'm not saying, and I've been raising this issue right from the first conference when I got associated with, not directly as a in the NALSA, but Justice Kaul introduced me to NALSA. I raised that issue. Now, 35 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 41A of the court says issues of notice to the accused at the pre-arrest stage. 38 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita and 41D gives statutory right to legal assistance to a person when he's arrested or interrogated. There is statutory provision in form of 22, section Article 22, which is to the same effect. Now, what is the importance of this pre-arrest arrest stage? The importance is makes a suspect feel less isolated or intimidated, safeguards their rights as per law, keeps in check police aggression and abuse of power, avoids unnecessary arrests, gains vital and time-sensitive information or evidence which before suspects defense which may not be available after passage of time, protect the suspects from being subjected to wrongful self-incrimination contrary to statutory and constitutional protections. But the most important thing is put in the other block, the main block. Legal assistance to an individual at the early stage. There are times when the individual and family are misguided. They're divested of sources of money and resources and exploited. This is clear from the fact that number of legal aid cases which we file in appeal, assistance which is given in appeal is much higher than the trial court. Because by the time the trial gets over, people have exhausted all their sources. They are forced to come to legal aid because they don't have any money. So this is very important for us. We must do it. And during the course of training, over the years, what I found was we have lost importance of understanding the importance of police diary. That must be emphasized. All our legal aid counsels must be told, and judges also, Whenever an accused is produced before you for the first time, you must examine the police diary and initial and sign it. If you can't do it, tell your court master to do it. Under the law, now it cannot be loose leaf, it has to be bound, it has to be paginated. An appeal without examining the police diary. And I have acquitted accused by finding ways and means on that. Suicide, because the police at first reported suicide. The husband had a dispute with his wife, and the wife was refusing to come with him. He went out, poured kerosene on himself, and set himself to fire. And later on, in his dying declaration, implicated all the family members of the wife, including the wife. And that information, the 3-4 statements were completely blanked out. I had another case where a person had been in the NDPS Act for almost 8 years. When I called for the police file, I noticed the sample sent was returned, seal is broken.
it was resent, and the first report was concealed from the court. Third case, where a vagabond lady was found dead. Somebody was implicated. It was mentioned in the police file, though not 161 statement was missing. And it was a family member of that vagabond who fairly well off, who were also contacted by the police, and later on the whole story changed. Very important for you to sign and execute, and all the lawyers, LDCS panel lawyers in the district courts must be told about it. This art has died down. I don't think anybody does it. As judges also, please ensure this. Now, this is the figures now we have with regard to legal aid and assistance at the pre-arrest stage. First, take you through the problem of arrest in India. Almost 1.4 crore arrests are made, 1.40 crore arrests are made in the country in a year. That means 1% of the Indian population is arrested every year. This doesn't mean they go to jail. They can be released on bail and so on. Most of the arrests, that is CRPC or other, only 38% arrests are under the IPC or the state of local laws, which is something of concern. The other figure which is quite interesting in this is that there are 54 lakh arrests made under the IPC and state and local laws, and about 86 lakh arrests made under the where the people don't come to the court itself. This gives you the details. 1 minute, please. This is not 2022, not 2023. I couldn't get the 2023 data. In that year, total number of prisoners admitted to prison, including those who came back to the prison after internal transfers, returned from leave, parole, etc., is 18 lakhs. Total number of prisoners released from jail is 16,73,000. So the people coming to the prison are more than the people coming out of prison. And look at the prison population, the ratio of under trials is 70, increased from 2021 to 2022 of 3.4. We both for the judiciary as well as for the NALSA, we have to check out the figures and facts. The amount of legal aid which was given legal assistance at the pre-arrest stage was only 27,521. It has to go up. 20,000. This gives a figure and details with regard to the status of persons in prison in Himachal Pradesh, Chandigarh, Punjab and Haryana. There are 15 jails in Himachal Pradesh. The total number of prisons is 2,765. And total number of UTP stands for under trial prisoners, which is 64%, which is better than the All-India figure of 70%. Himachal Pradesh that is doing better than the All India figure, but the figure 64% is still very high because only 36% of the prison population consists of convicts. We have to work on it. How do we work on it? Of course, something is beyond NALSA's control, but most of us are members of the judiciary, so we also understand we have to work on this. And that means 22% of the convicts are only in jails. The rest is 78% under trial, and Haryana is 26%. So this figure should be better. We have to set. We can't obviously change the whole thing within 1 year, but it tells you what is the percentage of civil and criminal matters in a particular state. In Himachal Pradesh, 73% matters are criminal matters. So please, all of you from Himachal Pradesh, for example, your knowledge about the criminal law, you'll have to be. What's the reason? Why is there so much difference in that? Chandigarh did 77%. I thought Chandigarh would not. How many PLVs you require? How many legal aid counsels, panel lawyers? Depends on the number of cases. 38 pro bono lawyers. This figure gives us the total number of the DLSAs, talukas in different states, front offices, panel advocates, paralegal volunteers, and pro bono lawyers. This may require some improvement. I think
we have to work on this a little bit. 9 TLSs. Punjab front offices are more than the number of TLSs. In fact, TLSs is equal. So all the district legal services authority and state Talaba legal services authorities have front offices. Haryana also, everybody has panel lawyers, etc. are there. But the PLVs and pro bono lawyers is something we have to work on. This figure gives you, with regard to the legal services clinics, which we have 11,000 clinics were organized in the calendar year. Punjab was 168 and Haryana was 104. Himachal doesn't have any mobile vans. I don't know whether Himachal Pradesh should have mobile vans. Please examine that if you want for legal aid clinics, or we can take it for the district administration to use their facilities, because we have to reach out to the villages. We have to reach out to the people in the villages for that. Himachal Pradesh had persons visiting the clinics is substantially higher, 87,831, which is a very good figure. Legal assistance given in these clinics is also very good, 80,095. That figure comes down in Punjab and Haryana, so this is something we'll have to look around. Why the people coming, visiting the legal aid clinics in Punjab is 14,000 plus, Haryana is 23,000 plus. That should go up. That somehow we must, or maybe there's something else which is missing out in the figures, because figures can be deceptive. So keep this in mind, because you'll have to work on this. And this will help you, evaluate yourself, how you perform. This gives us a number of prison legal aid clinics. Himachal Pradesh has 14, all the 14 jails have. Chandigarh has 1 jail, but there are 2 legal aid clinics. Punjab again has 25 and 25 jails and 30 legal aid clinics. Haryana has 20 and 22 legal aid. Excellent, it's very good. The number of convict PLVs is something we have to look around for. Should we increase, or are we satisfied with it? Because it helps us, because when we have prisoners and they speak well about us, then other confidence builds up in the system. So prison PLVs is an important part, and if you talk to the prisoners, most of them know much more about law than even the lawyers. So that's something we'll have to take into account. The number of people visiting the legal aid clinics, you have to keep a check. I've given those figures, but you have to keep a check and finding out whether the number is going up, down, what is the reason why it's going down, why the number not increasing. Then the under trial review committee, that's a humongous exercise we have taken. There have been issues with under trial review committee, because sometimes the meetings were not being held. Wherever the meetings are not being held, please inform the District Legal Services Authority, they'll take it up. This cannot be tolerated. There's no way a person should be in prison when under the 14 guidelines. Now I've added one more because of the new Sanhita, which says 1/3 if you have committed, if you have under 1/3 of the sentence as stipulated, and you're first time offender, you're entitled to bail. So I've added one more. So those should be on your fingertips. Maintain data and ensure that pan-India figure of the number of people who have been given benefit of UTRs. One of the executive chairperson of the NALSA saying that our UTRC, there's a huge gap between the UTRC recommended and the bail applications being filed and finally allowed. I have checked up, in fact somebody made a statement also to that effect in the papers. I then informed them that there are cases in which the accused don't want to file an application because they are involved in multiple offences. If they're given bail in that case, then the law doesn't permit setting off of that period when he is in jail, but he's granted bail in that particular case. So we'll have to segregate that data. We'll have to working on it to segregate that data, and also data with regard to
if you have information, what is the other reason? Because at times I'm also given to understand that family members refuse. We don't want it out because, but in those cases, then we'll have to the accused and the family members. We must get in touch with them. This gives us data with regard to the Himachal Pradesh under trial review committees and their performance. In Himachal Pradesh, it says that 11.79% of the total prison population was found to be eligible under the UTRP guidelines to be eligible for premature or release. That's a sizable one. 11% is very sizable. Ultimately was 79% of those identified, 79.30. Bail applications were at 88.33%. There's a gap emerging. We must keep a check on where the gap is there. And 53.89% were recommended. So wherever, and sometimes courts are also very strict in granting, even if they are falling in those guidelines. In those cases, then file an appeal or challenge that order. We have to do that. This is the figure with regard to Chandigarh, which is excellent. Recommended for release was 100%. Whoever identified. Bail applications were filed in 90.48 and 47.42 recommended for grant bail. Chandigarh is a smaller place, but nevertheless this figure is something which is to be appreciated. There's a lot of work which was said. More than 2% of the people who were identified were recommended for release. Bail applications came down very drastically to 43.96%. There must be some reason for that. I'm quite sure. Once we have identified, we must have pressed for filing of applications, but the application must not have been filed for some reason. So that has to be checked. Here, 14.35% of the total was eligible, identified as eligible. Bail applications recommended for release was 59. The figure came down drastically after examination. That means there are a number of cases where there is an issue arising, maybe on multiple factors or some other reason. Recommended applications were filed 69.50 and 44.29% were recommended for release, were in fact released. Now, premature release is a huge issue in India. I am a little confused about the figure. Maybe the figures do not reflect the actual position, because if I go by these figures, only about 2% of the convicts were given premature release. The figure may not be correct because this 3,353 applications, numbers were found eligible for premature release, number of assisted. The number of prisoners released were 1,760. This is for data for calendar year 2023. The reason may be because we have a remission policy in the sense that good conduct gives you certain benefits, certain number of months are in vain. Maybe this figure doesn't include that. So we have to rework out our figures. Data collection is very important. Data collection is equally important than relying upon data. If you rely upon data without ensuring data collection is proper, you can reach false conclusion. Don't do that. So I'm not very sure, because good conduct at times you said information that may not be counted. But at the same time, this figure shows that it's not a very good situation. Petty offence is not a repeat offender. Why should probation be applied? Why don't we do that? Plea bargaining, maybe for some reasons, it's not got on. But as far as probation is concerned, we have to focus on that, at least for the petty offences. We must now emphasize on probation. It's not really caught on. We have a problem with the probationary officers, but we can tackle that. I have in the Supreme Court or even in the High Court directed State Legal Service Authority to appoint a person to go and interact with the family and find out. In one or two cases, I got information that the accused wants to study further. He has aspirations of becoming so and so, do so and so in life. Today morning, I read in the papers, short snippet, that in McLeodganj, a woman beggar was identified by a monk, and she's become a doctor. Look at the transformation which has taken place from
been completely, and what a transformation. I'm sure this can happen, and many others. And many of the crimes which are happen in India are because of lack of service. They're momentary crimes. These are because of the passion, heat of the moment you commit a crime. So these are the cases where we have to work on. This figure gives us, with regard to the premature release in Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab and Haryana, according to me, figures as they stand as per data are not very good. We have to work on that. I was just talking to Justice Sandhavati, we also have to ensure once the prisoners come out. This is part of our role. Prison authorities do it a little bit, but we'll have to also get activated on this front, which is, it means a lot of work also, but a difficult task, because finding employment is not so easy. There were news items in Delhi when companies had come forward to employ them. Probably we'll have to explore that possibility, especially in cases where the prisoners have really reformed, they have succeeded getting educated, performing their role in the prisons has been excellent, and there is no cause for worry. According to me, the information data I have got is working well compared to the Bangalore scheme. Most of the places is done well, and it's an improvement, but it's too early to say how it is going. To take a little work. Their roles is legal advice and assistance, representation, conducting trials and appeals, handling demand and bail work, legal assistance at pre-release stage, legal aid work related to district courts, periodical visit to district prisons. So please keep all these roles in mind when you evaluate, self-evaluation done by the LDCS, as well as by when we evaluate how much work they have done in all these areas. You can't just don't leave it to one area. Now this gives us pan-India figure of the LDCS infrastructure. Out of 703, it's in function 5656. It was stopped because our budget got exhausted. So it was stopped at 556. Now probably we have enough budget, we'll be expanding it. Total number of chief LDCs in the country are about 523, which is less than the number of LDCS officers, because in some places we have not been able to find chief LDCs. Then also the deputy chief is also 627, which is near about the number of districts where we have implemented. And assistant is 1247. Assistants are doing, number is quite good. But the number of women chief LDC is 48, deputy 124, requires a little improvement. As far as assistants LDC is concerned, they are very fairly equally represented. Yes, we have to work on this. Maybe there is an issue, but we have to tackle that issue. How to deal with it. Now we come to the which all districts in Himachal Pradesh have LDCS and others. Chief LDCS are there 5, and no, there is no women chief LDCS in Himachal Pradesh. Number of deputy is 12 and 1. Assistant is 15. Please look into it. No compulsion, but look into it. Is it affecting the system? Because in some places I got information that the LDCS councils have to fill up the data, and that takes a lot of time. If they don't have work, fine. But if they have more than enough work, please appoint assistants to deal with it. Then it becomes easier, the workload is taken care of. In one of the states I went, the chief LDCS said they are so popular, I got 400 cases for protesting because people were going to him. But he said, I have to fill up the data every day. So he uses an assistant LDCS. Chief LDCS and the deputy must guide the assistant, because the assistants can be from 0 to 1, 3 years in council when you join the assistant start working. This is with regard to Chandigarh. Again, no women in chief, as well as deputy, maybe chief is not too many there.
but as far as assistant is concerned, equal 2 is to 2. Assistants are there. This is Punjab data. Then number of assistants are also there, others are there, you can have a look at that. These are figures with regard to Himachal Pradesh. If I look at the top two figures, Sessions Court and Magistrate Courts, the total figure comes out to about maybe about 865, and the total number of LACs we have in Himachal, chief LACs we have is 42. Chief and deputy, total number of LACs council is 42. So it means about per judge it will be fairly a figure of what are the new cases coming up. Everything has to be. If I include the the cost of demand work, then it is not what it's there are 8 councils, but each one of them has got about 70 cases, which is quite a lot. And also because Chandigarh is an expensive place to stay, more expensive the place you are, the place you work. Yes. Of sessions and magistrate court cases, each one of the LACs has got 195 somewhere. You'll have to think about it or to deal with it. There are 106 LACs. Please give a round of applause to him. So there the cost is shot up to 13,420. You'll have to look at per LACs is 54. If I include only such things, whatever has to be done. So some work has to be done over there. The remand cases over there are huge, 46,000. That may be the least. But then remand cases are equally important. I showed you the figure. The pay is 1,72,000 cases of that India were dealt with us in the remand stage. These are the parameters for LACs which we must examine. Infrastructure, capacity building, compliance with standard operating procedure, complaints faced by LACs to trial and appeal, monitoring and advocacy quality of legal and advice, working of the mentoring and monitoring committees. Mentoring and monitoring committees are very important. We should not undermine that, because our system will work only if the mentoring and monitoring committees perform their job. If they are looking into the various effects and how the people are working. Effectiveness of handbook of NALSA for formats. If you have any suggestions on it, please be welcome to tell us. We are always working on it. Parameters to determine the quality of legal aid provided. That's again I found in jails. People are not accepting legal aid, or they don't want to avail of legal aid services even if they're poor. I have known people who get money, who don't even money to police. Now we come to the juvenile. This one aspect. In the morning I was told there's some issue. We should coordinate with juvenile justice board committees. Yes, that's required. But at the same time, even if they're two different wings looking into it, it becomes a check, double check. Both by them and both by us. But we have to coordinate. Somewhere we have to do it. The Restoring the Youth campaign was organized on 25th of January 2024. The difficulty is because I've told you that number of people being released is substantial. Number of people being then asked to intake is also substantial. So this has to be a constant effort by us. Where they could be juvenile was simple. Anybody within the age group of 18 to 23, we will take into account. We will take that exercise. The registers will not be sometimes accurate. So wherever you find that, just take that exercise. Appoint them. Just go through the verify those exercises. Given the data with regard to the cases we have filed where we have succeeded, I'm not reading out the data. This is again
Okay. This next slide is with regard to the legal programs. It gives the legal awareness programs across country. I was very impressed with the figures both of Haryana and Punjab. 10 lakhs 34,000 and 42 lakhs 85,000. These are very impressive figures. It still catches the place from here, you call it the dialect, the language you're speaking, and accordingly directs you. So we then can, and we can't downgrade the system, because if we downgrade the system, then we won't be able to achieve, get this legal aid requires language he understands. So that's a problem. Now, if you look at the figure for Himachal Pradesh, there are about 72 persons who are put on roll as advocates who are providing. Per call, total number of calls is 1285 who are on, and we have been trying, we get it, we dial up these numbers. Sometimes we get response, sometimes we don't get response. So this is something of a worry. We are incurring, I think, 18 lakhs a month, 15 to 18 lakhs a month, all the ways to interact and go to them. So we must, I mean, all NASA songs now, please add that. Free legal aid के लिए इस पे कॉल करिए. कोई लीगल सहायता चाहिए हो, कोई बपूश ना, second opinion लेनी. Make a caption of that, absolutely. In tandem with the number of cases. This is with regard to Chandigarh, with regard to the helpline number. This is again, here the figures with regard to physical applications is got as well as registration on LSCMS portal is concerned. But for the figures with regard to the helpline number are virtually the same, not too good, not too good. Portal registration here again, I think LACMS portal, the registrations of the data feeding requires little upgradation and a push. This with regard to Haryana, same plus 36 advocates who are LADCS again, probably the number of cases being registered has to go up. LCMS portal, just look into it. Maybe the figures are maybe wrong. Just look into it. Victims, the Himachal is 2.60, 2.64. There's some issues which have come up. Punjab is 20 crores, 41 lakhs, which I think is a good figure, and 25.17 crores. Having said that, there have been some issues which have been flagged. We have to be careful about those issues, but we should not get overcautious and over negative on that. So this will require a little examination. Punjab 24.1 and 25.17 is good. But it also depends on the number of cases, number of applications disposed of, the number of victims involved. Punjab and Haryana has much higher. Haryana, the compensation is, the number is less, but the compensation figure is higher. Maybe it's the same thing with the online mediation course, training course. It's a 30-hour course, online program. It will be open to everybody within a month or so. We have already started with the first batch of online training. There will be induction for 2.5 hours, then orientation induction for 2.5 hours, which is going to be physical and or interactive. Then about 2.5 to 3 hours midterm. Will be okay. We recorded about 120 hours of audio video from expert trained mediators. We've now condensed it to about 40 hours. We took help of about 72 mediator trainers, out of which some responded, some did not. Ultimately, I think we were able to get about 40 plus, 48 plus trainer mediators who were given there, who worked on it, and I think this should work. This should work. I have some leaders who want to take undertaking to undergo those lectures, and then they fill up those questions. There are also role plays, etc., which we have assigned. They send them to the mediator training, mediator sessions where they're actually happening, and where there's lack of mediation sessions. Please, we are coming up hopefully with online mediation sessions being telecast, obviously with the consent of the parties, and probably will be blurring the faces
accepting. Maybe you can hear the voice and maybe you can moderate the law. I don't think I can be a mediator. I'm a judge. I'm an adjudicator. I can't be a mediator. I don't have that ability. I confess about it. Most of us wrongly feel we are good mediators. Mediation skills are very different from an advocate's and adjudicator's skills. Adjudicators normally say right and wrong. Mediator will never say you are right or wrong. Advocates is argumentative. Small thing will make it argument. The skills of mediator are very, very different. So each person has his own mindset. We have to find out whether you have the mindset for it. I can't be a mediator. I'd like to do the course because it's helpful for your personal development, your personality development, but mediator, I'm not trying to be one. I'll invariably pronounce it that way. I can't do that. 699, Chandigarh 635, Punjab 3917, Haryana 3205. The mediation centers, we have trained mediators 765, Haryana 25,069. Himachal Pradesh is catching on. But I also keep in mind the total number of civil cases. Now we do that. And maybe sometimes complainants are very angry. They justify it. You can't force them. Say, please decide it. Why don't you decide it? He's right to say that. Why don't you adjudicate and decide? I'm not prolong it. Sense for mediation. Don't do that. Don't allow that. Immediately send it back. If you find there is no possibility or chance of mediation, the element of mediation, settlement is lacking, please send it back to the very first hearing. The number of non-starter cases are huge, but ensure that. Ensure that, don't allow it to happen. And where you find the judges are repeating to doing it, probably matter will have to be taken up by the respective administrative judges for ensuring that this does not happen. Okay. This gives the statistics, all India statistics of that. We probably must be crossing more than 60,000 today, 60 lakh cases. Number of cases settled through mediation, which includes connected matters, is almost 11 lakh cases from 2016 to 2022. The figure is very good, so you know where the wind is blowing, which side the wind is blowing. This is the way to go about. Now, this is pre-institutional mediation. This gives the figure. You can see what settlements. It went up to, we started at a very low figure, so probably it's there, but this shows it's got a problem. There is progress. We have now introduced, or the new act has come into force, Mediation Act has come into force, and I want to point out one provision which we have sometimes overlooked, which we have not probably focused so much, is section 43 of the new Mediation Act. It's a section which it gives a new role to us. It's for community mediation. Until the government is keen that we take up that role, community mediation includes mediation for families, societies, and whenever there is a social turmoil or problems in the society. There we'll have to step in, and the section also gives the details of how the mediation committees are to work, who will be members of the mediation committee. So please have a look into it. Soon we'll be performing this role. It's a very, very important role, very progressive legislation. So now community disputes, etc., can be settled through mediation. And we'll have to train them, we'll have to select the persons who will act as mediators. It's a very important and bold move. Of course, till we have formed, administration is also involved. But please have a look at that provision. I don't know, I've got it, maybe it's lying on the table. I'm not reading out to you. Please go into that provision, it's very important. This is the figure for national Lok Adalats. I'm not going to look at it. National Lok Adalats, I think, and state Lok Adalats are very, very popular. This gives us details of that. The problem, which I feel, the problem area of Lok Adalats is to identify most permanent Lok Adalats are not working. The figures are not very
banning. So just check up on that. I've already voted a change in the payment. What payment we are doing. There's some litigation filed also for increase in mediation and public amount being paid. So I voted some change in that. But I want your inputs. Please be free to write to us, inform us how do you, what changes we require in public system. If that can work. And we should not, I feel, we should have more judges in permanent local adat because it's not meant to be a source of income. Permanent local adat is not meant to be a source of income to them. But at the same time, you sometimes feel like, okay, let me do this good work. I've got enough money, I've got enough resources to look after myself. In the end, reaching in, reach out, etc., etc. We all talked about optimum utilization and the issues which are bothering me as in the Nalsa, and then we can. I won't now speak. Your session is to all the others who can now handle the stuff. But I've given you bird's eye view what the 3 states are doing, where we are doing well, which are the areas where we have some improvement. Thank you so much for your attention. It is my distinct honor. His Lordship has graciously joined us today, and we are privileged to have him with us. To express our respect and gratitude, I would like to kindly request Shri Rajiv Bali, Learned Chairman, District Legal Services Authority, Kangra, to honor the Honorable Chief Justice, please.